हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के स्ट्रीम में हम बात करेंगे यूबिक्विटी यूनिफाई नेटवर्क्स के बारे में। जैसा कि लास्ट स्ट्रीम में हमने यूबिक्विटी यूनिफाई नेटवर्क्स के बारे में बात किया था। तो टुडे वी विल टॉक अबाउट द लेटेस्ट रिलीज यूनिफाई नेटवर्क वर्जन विच इज़ 9.3.43। ऑल्सो एक चीज़ पेंडिंग रह गई है। लास्ट वीक हमने गिव अवे अनाउंस किया था फॉर दिस एज राउटर एक्स, एज यू कैन सी हियर। बट आई थिंक जो विनर अनाउंस हुआ था उसने अभी तक कांटेक्ट नहीं किया है मुझे। सो आई थिंक अभी लगता है वापस गिव अवे करना होगा। तो आई होप अगर अभी कोई चैट पे आया है तो हाई करे एंड थम्स अप करे ये वीडियो को। सो आई विल ट्राई टू गिव अवे दिस एज राउटर एक्स राइट अवे। लेट मी नो इन द कमेंट्स। ओके, सो सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये है यूनिफाई नेटवर्क रनिंग ऑन क्लाउड की जेन 2 प्लस। सो आई थिंक एफ जी टेक स्टोर शैलेंद्र जी का कमेंट आया है। लेट मी रीड दैट। आई थिंक इसको क्लीन करना पड़ेगा बॉक्स। शायद अभी मुझे ऑन करना पड़ेगा लगता। क्लीन। सॉरी अबाउट दैट। एक मिनट में अपने मोबाइल में चेक करूं कि मेरी आवाज़ बराबर आ रही है कि नहीं। और जस्ट गिव मी ए सेकेंड प्लीज़। सॉरी अबाउट दैट। एक मिनट में हाय हाय रोशन। हाँ, रोशन एफ जी टेक स्टोर से आया है। रोशन फ्रॉम एफ जी। आई कैन सी द कमेंट नाउ। सो या बेसिकली लास्ट वीक मैंने ये गिव अवे अनाउंस किया था एज राउटर एक्स, जो मेरे डेस्कटॉप पे काफ़ी दिन से रखा हुआ है, मैं यूज़ नहीं करता हूँ। तो मैंने गिव अवे अनाउंस किया था एंड आई थिंक विनर भी सेलेक्ट हो गया था। लेकिन 2 वीक्स हो गया है, विनर अभी तक मुझे कांटेक्ट नहीं किया है। तो बेसिकली आई थिंक मैं इसका गिव अवे ये लाइव सेशन पे ही करना चाह रहा हूँ। सो आई थिंक आई शुड गिव अवे टू वन ऑफ द गाय, आई मीन एनी वन फ्रॉम यू गाइस। लाइक कमेंट करो जिसको ये चाहिए, आई विल गिव अवे राइट अवे। So now let's talk about the past week, last week Ubiquiti UniFi से काफ़ी न्यू अपडेट्स आए हैं यूनिफाई नेटवर्क्स पे, यूनिफाई प्रोटेक्ट्स पे। तो आज के वीडियोस में हम यूनिफाई नेटवर्क 9.3.43 के बारे में बात करेंगे। सो लेट मी ओपन द कम्युनिटी रिलीज नोट फर्स्ट। community.ui.com. So from here you can check all the releases, notes and everything of the Ubiquiti. So हम देखेंगे दिस यूनिफाई नेटवर्क एप्लीकेशन 9.3.43। सो बेसिकली ये यूनिफाई नेटवर्क एप्लीकेशन में ओवरव्यू में अगर आप चेक करेंगे, सो वी गेट एनहांस कंटेंट फिल्टरिंग विथ साइबर सिक्योर। अगर आप साइबर सिक्योर यूज़ करते हैं तो इट्स a kind of subscription, like add-on subscription for IPS and IDS. You get extra signatures depending on your gateways. सो मैंने लास्ट वीक अपने लाइव में इसके बारे में शायद आपको बताया था कि हाउ विद साइबर सिक्योर बाय प्रूफ पॉइंट you can achieve more categories. Right now you can get
100+ कैनोनिकल कंटेंट कैटेगरीज पावर्ड बाय क्लाउडफेयर। सो उसके लिए बेसिकली आपको रिक्वायर है साइबर सिक्योर का सब्सक्रिप्शन, विच इज़ $99 पर ईयर फॉर ए सिंगल साइट। सो और रिक्वायरमेंट है यूनिफाई ओएस आपका 4.3 और न्यूअर। अगर आपके नेटवर्क में यूडीएम प्रो, क्लाउड गेटवे अल्ट्रा, जैसे कि मेरे डेस्क पे ये है क्लाउड गेटवे अल्ट्रा, अगर आप ये रन करते हैं अपने नेटवर्क पे और आप साइबर सिक्योर एक्टिव हैं, सब्सक्रिप्शन आपने लिया है $99 का, सो यू कैन गेट दिस कैटेगरीज एनहांस कंटेंट फिल्टरिंग विच आई विल शो यू राइट नाउ। सो उसके बाद आप देख सकते हैं रिवैम्प सिस्टम लॉग और सिम इंटीग्रेशन भी अपडेट हुआ है यूनिफाई में। सो आप ग्लोबली सर्च कर सकते हैं अपने लॉग्स फॉर ए क्लाइंट्स एडमिन एक्टिविटी, एवरीथिंग लाइक फॉर द filtering, IPS and IDS threat and everything. सो आप बेसिकली टाइप भी कर सकते हैं जो भी आपको लॉग्स चेक करना है, और उसमें भी इम्प्रूवमेंट आया है काफ़ी। और उसके बाद सबसे मतलब सबसे बेस्ट ये अपडेट का फीचर है अलार्म मैनेजर। सो बेसिकली अलार्म मैनेजर प्रीवियसली यूनिफाई प्रोटेक्ट में आया था, जिससे आप कस्टमाइज ट्रिगर कर सकते हैं अलार्म फॉर ए आई मीन क्लाइंट डिसकनेक्टेड, वाईफाई क्लाइंट डिसकनेक्टेड, एपी और गेटवे डिसकनेक्ट हो रहा है, तो आप इसमें नोटिफाई कर सकते हैं एज एन एडमिन, और वेब हुक यूआरएल भी कर सकते हैं, स्लैक, डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम। सो ये फीचर्स ऐड हुआ है। तो विद दिस फीचर आप मॉनिटर अपने अलर्ट्स को मॉनिटर कर सकते हैं, और इवन आप अपने थर्ड पार्टी जो आपका इंटीग्रेटर है वेब हुक से, उससे भी आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, और आपको नोटिफाई करेगा जब भी कोई अलार्म हिट हुआ। उसके बाद इम्प्रूवमेंट्स में आप काफ़ी चीज़ देख सकते हैं। इन्होंने डी एस लाइट ऑटो कन्फिग्रेशन का फॉर जापान नेशनल प्रोविजनिंग स्पेसिफिकेशन, और एडेड सपोर्ट फॉर द सीनेम डी एन एस रिकॉर्ड। सो ये भी एक चीज़ आपको नोटिस करना है कि यूबिक्विटी नाउ सपोर्ट द डी एन एस ऑप्शन। सो प्रीवियसली टाइप 8 4 times say all were supported, but they have added the CNAME record also, the DNS now. So it requires the UniFi OS like the UCG Ultra, UDM Pro and everything, UDM Pro Max. They should be running a 4.3 or newer version, so you can get the CNAME DNS record. And here are the bug fixes you will see. सो अभी हम देखेंगे यूनिफाई नेटवर्क, जो बेसिकली अगर आप सेटिंग्स में जाते हैं, सिस्टम्स में जाते हैं, तो आपको कंट्रोल प्लेन में यहाँ आप देख सकते हैं क्या वर्जन पे चालू है, 9.3.43, एंड द यूनिफाई क्लाउड की Gen 2 प्लस रन कर रहा है 4.3.6, विच इज़ अर्ली एक्सेस आई एम रनिंग, बट दिस इज़ नाउ ऑफिशियल स्टेबल, सो अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ द यूज़र्स। सो बेसिकली इसमें आपको वन बाय वन मैं सारे फीचर्स बताता हूँ। सो फर्स्ट वी विल टेक ए लुक इनटू द अलार्म मैनेजर। सो बेसिकली यहाँ पे आप सारी कैटेगरीज चेक कर सकते हैं अलार्म मैनेजर की, क्या क्या कैटेगरी, सिस्टम, सिक्योरिटी, पावर, इंटरनेट। सो ये सारी कैटेगरीज आप अलार्म ट्रिगर कर सकते हैं। तो यहाँ से आप क्रिएट एन अलार्म करेंगे, और क्रिएट एन अलार्म के बाद आप ये ऑप्शंस है यहाँ पे, आप कोई भी एक नाम दे सकते हैं अलार्म को, और फॉर मॉनिटरिंग आप क्लाइंट डिवाइस कनेक्टेड या डिसकनेक्ट हुई या हाई ट्रैफिक हुई, तो आप ये मॉनिटर कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द लिस्ट ऑफ द क्लाइंट, and like if you want to monitor any critical clients, like you are running a VPS server on and that should be notified, I mean SLA, high SLA on that, so you can just select that single client, and you can, I mean monitor it for it. So एक मिनट, just give me a second.
सो बेसिकली आप मॉनिटर कर सकते हैं क्लाइंट डिवाइस जो कनेक्ट हुआ, डिसकनेक्ट, या कोई भी क्लाइंट डिवाइस पे हाई ट्रैफिक जा रहा है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं विद दिस अलार्म मैनेजर। सो काफ़ी यूज़फुल फीचर्स है, यू शुड ट्राई इट आउट। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स अलार्म मैनेजर में आता है, ये है इंटरनेट। सो बेसिकली अभी मोस्ट प्रोबेबली, हाय हाय ओके, सो बेसिकली आप ये नेटवर्क अपने होम लैब में चला रहे हो, या ये कोई क्रिटिकल नेटवर्क चल रहा है, चाहे आपका या आप एमएसपी आईएसपी रन कर रहे हो। सो ये केस में इंटरनेट हाई लेटेंसी पैकेट लॉस एंड डेटा लिमिट is a very crucial notification. You should get notified whenever there is an internet is down, there is high latency detected. So बेसिकली इवन इसमें आप इंटरनेट डिस्कनेक्ट, हाई लेटेंसी, पैकेट लॉस एंड डेटा लिमिट। सो फॉर द डेटा लिमिट you can check for each of the clients where you have set a data limit. So you can select that particular client device and it will give you the notification here on that admins or webhook URL. So basically अलार्म मैनेजर में आप काफ़ी सारे डिटेल्स लॉग का नोटिफिकेशन दे सकते हैं, और बेसिकली ये पावर के लिए PoE। सो एज यू ऑल नो, यूबिक्विटी has all PoE switches and the non-PoE switches. So for example, if you have any PoE switches and there are insufficient power drawn on that particular switch, it will notify to that client, and it will even you can set the webhook URL. So even you can check the backup power in use. So basically अगर आप UniFi का RPS use करते हैं, redundant power system, which is not a UPS, but it provide a power supply to the internal PSU of the Ubiquiti devices. So basically अगर उसमें failure होता है तो इसमें backup power use का आपको notification मिल सकता है। उसके बाद security, this is the most important thing, like if you are monitoring any this is the all-in-one gateway devices from the Ubiquiti, because which has IPS and IDS and all layer 7 traffic. So in this, like if you want to notify any clients which is blocked by firewall, and if you have configured honeypot, you can it will be detected and notified on the clients, like for example, and even there are any threat detected, it will be notified to you. And after that you will see this is the system options. So under the systems you can check for the VPN user connected, disconnected, any devices like the modem restarted. So any of the client like the admin activity who has restarted the modem multiple, if any devices disconnected multiple time, restarted, fan issues detected, you can see. And this is for the admin activity. If I am logging to the UniFi network application from anywhere, from through my UniFi network app, mobile, or from the desktop, it will notify. And here is the network notification. So you can see if you are using radius authentication from the Ubiquiti gateways, it will be notified here. And if there are IP address conflict, gateway configuration fail, DSCP lease exhausted, everything you will be notified. And similarly you can look for the Wi-Fi notification also, like impersonation detected, DFS radar detected. If you are using any DFS frequencies, it will be detected, and if you are using any AFC issues, so it will be notified. And in the last network version, Ubiquiti has brought the DSCP manager. So I think in my shorts, I have done recently shorts on this, so you have seen that what does the DSCP manager do. So basically ये DSCP manager में आप काफ़ी सारी DSCP लीज मॉनिटर कर सकते हैं, ऑल योर नेटवर्क। बेसिकली आप फिल्टर भी कर सकते हैं अपने मेन नेटवर्क, जो आपका मेन मैनेजमेंट नेटवर्क है, कैमरा हो गया, ऑल डिफरेंट वीलैंस आप सारे मॉनिटर कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें आप फिल्टर कर सकते हैं अब ऑनलाइन DSCP क्लाइंट्स विच आर ऑनलाइन,
even you can check for the offline one which are offline, and you have given dynamic or the fixed IP, even you can check that also. And after that, there's also good thing like you can export the list of the DHCP leases on this network. So from here you can export, and there is also option to import that. So you can see here you can import the CSV file. So this is pretty good features, and I think you will like that all those features. So for example, under this DSCP network, you can directly click on the settings and modify the DSCP settings from here directly. And after that, this is the noticeable difference you will see in the UniFi network application. So ये है client devices. So basically आप ऑनलाइन क्लाइंट्स को डायरेक्टली फ्रॉम हियर सर्च कर सकते हैं, and even the connection, if they are wired or the wireless, you can check that. If wired connections, wireless, you can check that. After that, even you can check for the client devices which is connected to the UK ultra access point only, so it will be notified. And if you want to check for the U7 Pro access point, which are the client are connected to the U7 access point and what Wi-Fi technology and everything. And even there is a good thing also, it filter with the vendors also. So you can check here, if you are using any you're using Proxmox on that server, so it will notify with that vendor. So you can just click on here and look at the Proxmox server, like all these vendors are running on the server, and look for the Apple devices. If any of the clients Apple devices, you can check for that. So depending on that, even you can check for the usage of the clients. For example, from here you can check from the 24-hour usage. So this if you want to check for 100 MB usage, so this much client has used the 24-hour usage, so you can filter that out. So these are all good features. Even you can clear the filters from here directly. If you want to clear all those filter, you can customize the column if you want anything on this column to be added, like the TX, RX rate, first scene, last scene, and everything. So you can do that. So this is quite good enhancement in the UniFi network application. And after that, I am about to show you about the content filtering. So basically जैसा कि हमने community release note में देखा, to get the enhanced content filtering, all you need to do, you have to requires an active cyber secure subscription, और उसके लिए आपको UniFi OS 4.3 और न्यूअर. सो बेसिकली अभी ये नेटवर्क पे मेरा यूनिफाई ओएस नहीं रन हो रहा है, ये नेटवर्क पे रन हो रहा है क्लाउड की Gen 2 प्लस पे यूबिक्विटी का गेटवेज विच इज़ अ UXG Pro. एंड UXG Pro पे कौन से फर्मवेयर वर्जन पे रन कर रहा है 4.2. सो आई थिंक दैट फीचर इज़ नॉट अवेलेबल फॉर the UXG Pro, but the same feature is available for the Dream Machine Pro, which is I am running on the version 4.3.6, which is early, and I am also on the UniFi network 9.3.43. So basically I am about to show you the enhanced content filtering by the cyber secure proof point. सो बेसिकली अगर आप यहाँ से साइबर सिक्योर में जाते हैं तो यहाँ पे आपको कंटेंट फिल्टर का ऑप्शन मिल जाएगा. सो बेसिकली इन दिस कंटेंट फिल्टरिंग यू विल गेट लॉट्स ऑफ कैटेगरीज like it has mentioned here. So you will get 100 plus granular content categories powered by Cloudflare, safe search support for Google, Bing and YouTube, granular control, apply filtering by network or individual device, flexible scheduling and allow list for personalized filtering. So basically ये है ड्रीम मशीन प्रो और रन कर रहा है अर्ली एक्सेस वर्जन. सो बेसिकली आप सारी कैटेगरीज को यहाँ सर्च कर सकते हैं, and even you can turn the filtering enhance, or even if you want to do for the basics, it will
use adult and malicious filter only. So if you look for the enhance, you will get these type of categories. You can check here. Okay, just give me a second. ओके, सो बेसिकली इसमें आपको 100 प्लस कैटेगरीज मिल जाएगी कंटेंट एनहांस कंटेंट बाय क्लाउड फेयर. सो यू कैन चेक ऑल दोज एंड इवन यू कैन check that option, and even you can select the source. Like for example, you want the guest network on that content filtering, you want to block all those filtering, you can use that. Even you can schedule for that always daily one time, or customize, you can customize that. So this enhanced content filtering has been added in the new version 9.3.43. And I think after that Ubiquiti has improved some features, like if you check, yeah, revamp system log and seam integration. So basically you can check here under the logs. So here you will see they have revamped this content, I mean system logs. So for example, you can monitor all your client devices. Like from here it will give you all the details in the CEF log format, like this client devices ROM. So you can check the description, like the Redmi Note 8 has been roam from U6 Pro to the UAPAC Lite, and the which channel it was connected, and what frequency, what was the roaming decision, 90 dBm to 86 dBm. So you will get all the detailed logs in this in the I mean in this new version. So basically आप सारे लॉग्स को अपने सिस लॉग सर्वर पे सेंड कर सकते हैं, इफ़ यू आर यूजिंग एनी syslog सर्वर ऑन द सीम सर्वर. तो आप बेसिकली वहाँ पे सेंड कर सकते हैं. तो बेसिकली एक्टिविटी लॉगिंग syslog में या तो आप मैनुअल उसको इंटरनली स्टोर करिए, या तो आप सीम सर्वर आप यूज़ करते हैं लाइक द ग्रे लॉग. So you can send those activity logging to your Greylog. So basically in this case I'm using Greylog server here. So you can check here under the search, let me check for you. So you can check this log, the gray log from here, the Dream Machine Pro. I mean, you can check the source and for all of the devices. So basically, I'm using same server with the gray log, and which is running there. So ये फीचर्स काफ़ी यूज़फुल है टू फॉर द ट्रबल शूटिंग पर्पस. सो that is very useful. I think you should try that out if you are running the UniFi network. And I think I have covered the all UniFi network 9.4.3 UniFi network topic. Now let's move on the UniFi Drive 3.0. I think most of you guys know about it. The UniFi has their own NAS, which they call as UniFi NAS Pro, UNAS Pro. So which is the 7 hard drive bay, and they name it as a unified drive. So recently they released a new version, which is unified drive 3.0. And with that 3.0 you will get flexible RAID groups, storage pools, you can do that. So right now I have my UNAS Pro, and I'm just using 3 hard drives of 8 terabyte. And after that, in that one is I'm using basics protection in the RAID 5. So but with this new unified drive 3.0, you will get an options like you can create a I mean
group parity, storage pools, like uneven storage drive, you can add it. So if you go here and click on here, so this is the RAID option from the Ubiquiti, and it's quite cool. You can check here. You get these options. For example, this is the standard RAID configuration versus multiple RAID groups. सो इन द स्टैंडर्ड रेड कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे all 8 hard drives are on 8 TB, and it uses one hard drive failure protection, so you get RAID 5 56 TB available. And after that you can check this multiple RAID. So this is a standard RAID which I am using, but now you can add a multiple RAID groups here. So in the multiple RAID groups, you can see you can use uneven storage drives. So for example, in one group I'm using all 16 TB for hard drives, and in one group I'm using 8 TB. So in this it use two hard drive failure protection, and with the RAID 5 I'm getting 72 TB available. So after that it also added an options of multiple storage pools, like here for example better protection and better performance. So with the better protection you will get the RAID 6 pool, so it gives you two hard drive failure protection, and with the RAID 10 it gives you two hard drive failure protection. And with the multiple storage pools you will get an options like the RAID group 1. In one storage pool you are using two RAID group, like RAID group 1 and RAID group 2. So in this you are using 16 TB of 3 hard drive, and in other RAID group you are using 8 TB of 2 hard drive. So in the storage pool B you can create a RAID group, and it gives you global hot spare. So it will automatically replace a failed drive in any RAID group, like RAID group 1, RAID group 2. So it will automatically fail over, and you don't have to manually be on site to change the hard drive. It will auto. So right now I'm just using storage pool 1, and which is the legacy one. And if you want, I have to create a new storage. For that I have to remove this storage pool. So इसके लिए मैं अभी एक अपना एक NAS बना रहा हूँ with HL4. I've already made a video on my channel, so if you have not checked out, please check that out and let me know your thoughts. So basically अगर मुझे एक न्यू स्टोरेज पूल क्रिएट करना है, तो इसके लिए मुझे ये स्टोरेज पूल 1, जो बेसिकली लेगेसी स्टोरेज पूल अभी यूबिक्विटी कहलाता है, इसमें आप देख सकते हैं आई एम यूजिंग 16 TB यूसेज कैपेसिटी, एंड RAID group 1 8 TB is protection, so it using RAID 5. So it is a legacy storage pool. So here you can check the RAID 5 here, the options. So I have to I mean take a backup of all hard drives and all these, and I have to store that data into the TrueNAS, and then I can create a RAID group, and I will put an extra hard drive for it, and it will be like more than 8 TB. So in that way I will create it. So right now all HDDs are 8 TB 7200 RPM. So these all are, I think, the Seagate one. I've already, I mean, if you check that, the hard drives, let me show you here about this console. Okay, storage. Yeah, you can check here. I'm using the Seagate Exhaust Enterprise hard drive, and you can see the powered on ours, and the bad sector count and everything you will see here. It is an optimal right now. So with the drive 3.0.9 you will get a flexible RAID group storage pool. So that is quite good feature. So you can have different RAID groups, multiple storage pools. So that is quite good features. So I'm waiting for my new hard drive to get it. Once I get the new hard drive, then I will be able to create a storage pool for that. And apart from that, I think
Ubiquiti has announced in their video that they will add the cloud service backup also. Right now, only Google Drive, OneDrive, and the Dropbox is available, but in the future, they said it will be available on the like the Amazon S3, Backblaze, and the Wasabi. So that is also quite good feature. So you can select a data backup. So as of now, I'm just using a normal backup on my TrueNAS, which I'm running on the Zima board 832. So you can see here I'm just backing up these folder, the Proxmox, TrueNAS, and the Protect Archive folder, which I have created here. So if you take a look here under the all files, uh, you will see these all drives I have created here. So basically Ubiquiti में अभी ये features add हुआ है. Right now you can just filter out any file type. Like for example, if you want to check for the images, you can just click on images. It will list all the images in your drive. So that is quite good features. As for example, if you want to check any video, so you can check that video, and even that video play will be very I mean there will be no latency on that, it will run without any issue. So these all are the video you can see here. It is running quite good here, and it should not be an issue. For example, you can check To this. install the hard drive, you have See, this is my here you will see here. so this You, was my one of the video you where have I to was just installing the hard drive on the, so you can check here. press it. Even you can check for the name, you can even filter it by name. Even if you want to check the PDF, sorry, the PDF, you can filter that out, and all the file will be listed here by the PDF. So let me know in the comment who if you guys are watching this live session, let me know what else you want me to show. And you can create a new shared drive from here directly, and there will be option you can give a name. There is a storage pool because I've already have one storage. Also there is also a good thing in the Ubiquiti because you get a snapshot options here. So I think they have a snapshot option here. For example, oh sorry, remove backup. Protections, remote backup. Yeah, you can create a snapshot also in the Ubiquiti. From here you will see these options like this application support up to 4096 snapshot across all devices. So whatever changes you are making, and if you think that changes does not help you, you can revert back to that snapshot which you have done. So for each drive, uh, you will get 128 snapshot limit. So you can see here I right now I have 85 snapshot all done, and it's already limited to 128 snapshot. And for the shared drives it goes up to 256. So you can check this out if you guys are using Ubiquiti UNAS Pro. This is quite good feature. And also I've shown about the time machine options because if you are using a MacBook and everything, like you can just use this time machine options, and you can back up your MacBook devices. For example, you can create add a person your drive account from here, and you can give a quota of I mean storage quota on that drive, and that will be backup here on your drive here. So even you can create the time machine backup again and again. But that is quite good features. I have set it for weekly, so weekly में ये एक backup ले लेता है. And you can check this backup here on my drives here. Yeah, you can check here. Safan Mac Mini.
So these all are the time machine backup, so that is quite good features. And I'm waiting for my new hard drive, so I can try the storage poll groups. So this was the Edge Router X I'm about to give away, and if you guys need it, you can just comment it down on this live session. I will give away to one of you guys who are interested in the Edge Router X. I think I've done a video on this previously. Um, I was using this router almost like for an year, and I didn't get any such issues on this Edge Router X gateway. And if you guys need this, let me know in the comments. I think I should end this live session. If you guys have any questions, you can let me know. Okay, so I think I'm getting a reply from Nexus X. I think that's Sridhar. Okay, so I think I should give it, give away to Sridhar. So you can reach me out on my email. I will give it away to you. So I think I've already done half an hour for this live session. If you guys have any questions, do let me know in the comment, and make sure to subscribe to my channel so I can get. I mean, I need you guys support, so please make sure to subscribe to my channel. And I think that's it for the today's video. I will do a live stream tomorrow. Tomorrow is Sunday, so I think I'm not sure about what topic should I discuss, but I will, let's see. I will put a community post and see what you guys suggest to do a live session or make a new video on that. Okay, thanks everyone for